Hello everyone, welcome to Pratham Test Prep. I am Ashish Bhargav and welcome to another episode of Deep Dive Session. And today Deep Dive Session is very important because we discuss about the governor appointment, their powers and their role. Why this topic? Because in Deep Dive Session, as we know that we discuss about such kind of topic which is in burning issues, which means that is in daily newspaper or editorial you will see that there is a clash between state government and governor. Somehow someone consider, or we can say the state initiative, state government think about the governor is a, we can say, agent of central government. So that's why there is a clash between state and center, and somehow it's weakened the federalism, which is known to be a, we can say, division of powers. So now here is we discuss about the governor appointment, their powers and role in a very detailed manner. So in deep dive session we discuss such topic which is something which we discuss in the very detailed manner, right? And now we think is next one about current affairs. So here are some important points that is related to about current affairs. The best way to know about current affairs is to study newspaper and magazines. So one should study magazines on a daily basis to be updated by current affairs. So newspaper is the best source, and that all the articles that in this session we have taken from the newspaper itself, right? And now a little progress each day adds up to a big result. So your time is limited, so don't waste it living someone else's life. Don't be trapped by dogma, which is living with the result of other people's thinkings. So this is a quote of Steve Jobs, and here is the news like from the Economics Times, as we can see. Just a second. So here is we're talking about Shimla. Shiv Pratap Shukla takes oath as a new governor of Himachal Pradesh. For the next moving, we can see retired Brigadier B.D. Mishra takes oath as a new Lieutenant Governor of Ladakh, and the President of India appointed 83 years old B.D. Mishra as Lieutenant Governor of Ladakh after accepting, and this news is on February 19. Resignation of Radha Krishna Mathur on February 12th. And the third, if you talk about the articles, UK budget session, SP Samajwadi Party disrupt governor's address with Go Back slogan. So here we can say is February 20th this year. And LA Ganeshan sworn as a Nagaland governor. So Lieutenant Ganeshan was earlier is governor of Manipur since August 2021, had held additional charge of West Bengal from July to November, and this is from the February 20th, 2023. And the Indian Express article is again the Express view on the governors reshuffle Raj Bhavan Dharma. New governors need to uphold the balance of power, spirit of federalism without to the state government. And this is called February 14th. So this is a very burning issues. We have to first know that how many states is now going to appoint the governors. 12 states and union territories of Ladakh will have new governors, the center announced on Sunday. This is February 12. This includes both the first time appointment as well as transfer of governors from one state to another. So according to a press release issued by Rashtrapati Bhavan Secretariat, President Draupadi Murmu has appointed Lieutenant General K.T. Patnaik as the governor of Arunachal Pradesh. This is a very current affairs news you need to remember, because in your exam they will ask you like which state governor recently appointed the new governor of the state from Arunachal is whom. Lakshman Prasad Acharya as the governor of Sikkim, SP Radhakrishnan as governor of Jharkhand, Shiv Pratap Shukla as governor of Himachal Pradesh, Gulab Chand Kataria as governor of Assam, and Justice retired S. Abdul Nazir as governor of Andhra Pradesh. So these are all things that we need to keep in mind, because new appointments, because the cabinet minister name, governor name, chief minister names of the states we need to remember for your exam perspective, right? So here is K.T. Patnaik, S.P. Radhakrishnan, Shiv Pratap Shukla, Gulab Chand Kataria, and Justice retired Abdul Nazir, that is governor of Andhra Pradesh. And the following governors have new responsibility. And which one is? So first one, Vishabhushan Harichandan, governor of Andhra Pradesh, has been appointed governor of Chhattisgarh. Anusuya Ulik, governor of Chhattisgarh, has been appointed as governor of Manipur. Lieutenant Ganesan, governor of Manipur, has been appointed as governor of Nagaland. Fagu Chauhan, governor of Bihar, has been appointed as governor of Meghalaya. Rajendra Vishwanath Arkar, governor of Himachal Pradesh,
appointed as governor of Bihar. Ramesh Bais, governor of Jharkhand, has been appointed as the governor of Maharashtra. And B.D. Mishra, as I told you in the news, as we can see, governor of Arunachal Pradesh has been appointed as the lieutenant governor of Ladakh. So these new appointments, always remember in your exam, always keep in mind, because ये जो जितने आपके अपॉइंटमेंट्स होते हैं न्यू गवर्नर्स की, चीफ मिनिस्टर्स की, कैबिनेट मिनिस्टर्स की, नीड टू रिमेंबर, बिकॉज दिस विल बी द दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन जो कि आपको हमेशा एग्जाम में पूछने जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. चलो नाउ how the governor of a state is appointed, what is the constitutional provision for that, so समझाने की कोशिश करें. So article 153 of the constitution says there shall be a governor for each state. ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 153. अच्छे से लर्न कर लो, बिकॉज देखो आर्टिकल्स जो हो गए आपके वो आपके इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं दैट आई कांट एक्सप्रेस यूनिवर्स, बिकॉज स्पेशली इफ यू टॉक अबाउट द लॉ एंट्रेंस एग्जाम, वहाँ पे आपको आर्टिकल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं. और आर्टिकल कौन से पूछे जाते हैं? विच इज़ इन द न्यूज़, राइट. So a few years after the commencement of the Constitution, an amendment in 1956 laid down that nothing in this article shall prevent the appointment of same person as governor for 2 or more states, which means that one person can be appointment for many states governor. गुवाहाटी में ऐसा है, असम के जो हमारे गवर्नर हैं वो 4 स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है. सो आर्टिकल 153 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहता है कि गवर्नर होनी चाहिए सारे स्टेट्स में. बाद में इसको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया 1956 में. सेम पर्सन एज गवर्नर फॉर 2 और मोर स्टेट्स. आर्टिकल 155 हमारा क्या कहता है? गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील, विच मीन्स दैट ये हमारा ये कहता है कि जो गवर्नर है स्टेट का शैल बी अपॉइंटेड बाय द President by warrant under his hand and seal. Under Article 156, the governor shall hold office during the pleasure of the president. Which means that इसका टाइम जो टेन्योर है वो आपका फिक्स नहीं है. So that's why Article 156 में गवर्नर को होल्ड करना चाहिए ऑफिस during the pleasure of president, but his normal term of office will be 5 years. ठीक है, ये आपके 5 साल की होनी चाहिए. So if the president withdraws her pleasure before the completion of 5 years, the governor has to step down, since the president act on the aid and advice of the prime minister and the union council of ministers. In effect, the governor is appointed and removed by the central government, which means simply we can say अगर president withdraw करता है pleasure को, then completion of 5 years the governor has to step down. So it means that there is no fixed tenure of the government, we can say governor की कोई fixed tenure fix नहीं है. Article 157 and 858 lay down the qualification of governor and the condition of his office. जो गवर्नर है must be a citizen of India and should have completed the age of 35 years. One more important fact, if you talk about जितने भी आप इंडिया के स्टेट्स देखेंगे, you will see the many states, many Indian states, the governor is not belonging to that particular state. Means that जो आपके गवर्नर है वो पर्टिकुलर उस स्टेट का कभी भी नहीं हो सकता. जैसे अगर बात करें उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर होंगे वो कभी भी बिलोंग करने वाले यूपी से नहीं होंगे. क्या ऐसा कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है? नहीं है जी, बिल्कुल नहीं है ऐसा. जो आपका हरियाणा का होगा गवर्नर वो कभी भी हरियाणा स्टेट से बिलोंग नहीं करता होगा, ठीक है. मतलब उसकी जो सिटीजनशिप है या सॉरी डोमिसाइल है वो कभी हरियाणा स्टेट की नहीं होंगी. सिमिलरली वी कैन से ऐसा कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न नहीं है, बिकॉज गवर्नर को बहुत सारे आपके ऑटोनोमस पावर दी जाती हैं सो दैट कि उसका मिसयूज़ नहीं हो. इसीलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई थी हमारे देश की, उन्होंने ऐसा प्लान किया. So the governor should not be a member of parliament or a state legislature and must not hold any of other office of profit. और कभी भी वो member of parliament नहीं होना चाहिए state legislature के. Which means that अगर state है in our country, a state which means that we have bicameralism. We have bicameralism. Bicameralism which means that we can say 1 and second, which means that फर्स्ट हम अगर इसमें देखें तो बाइकैमरलिज्म आपका फर्स्ट हमारा आता है स्टेट विथ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड उसमें सेकेंड आता है हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो बहुत सारे स्टेट्स हैं, लाइक वी कैन टॉक अबाउट कर्नाटका, लाइक वी कैन से उत्तर प्रदेश, लाइक महाराष्ट्र, लाइक बिहार, लाइक
Andhra and Telangana. These states have legislative assembly also and legislative council as well. इसमें आपका assembly और council दोनों है. So the governor should not be a member of parliament or a state legislature and must not hold any other office of profit. अब बात करते हैं what is the relationship between the governor and the state government. So the position of governor is envisaged as a political head who must act on the advice of council of ministers of the state. However, the governor enjoys certain powers under the constitution, जैसे कि giving or withholding assent to a bill passed by the state legislature, determining the time needed for a party to prove its majority of the state assembly, or in case such as hung verdict in an election, which party must be called first to prove its majority, which make its position very significant. Over the decades, जो गवर्नर है उसको देखा गया कि has been seen as an acting on behest of central government in power at the time and have been accused by state government, especially those in opposition, as acting as agent of center. So that's why there is a clash between governor and state government, and somehow it's weakened our federalism, which means that division of powers. This is the what things that we need to understand, that what is the role of governor and why there is a clash between state government and the governor, because it has to be considered, because especially in the opposition party as talking about the governor is now behaving as an agent of the central government. So constitution laid down no provision for the manner in which governor and state must engage publicly where there is a difference of opinion. This has traditionally been guided by respect of each other's boundaries. Later AILET, however, there have been bitter and we can say acrimonious exchange between state government and governors, with governors such as current Raja Sabha Chairman Jagdeep Dhankar, R.N. Ravi and Arif Muhammad Khan have been accused of partitions conducted by the Chief Minister of West Bengal, Tamil Nadu and Kerala respectively. इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. गवर्नर की पोस्ट कब से स्टार्ट की गई, क्यों हमें इंडियन गवर्नमेंट थिंक अबाउट टू अपॉइंटिंग द गवर्नर एज वेल, because the role of governor in imposing precedent rule in state dates as back in 1959. So our country got independent 1947, and 26 November 1949, that was the day our constitution was being completed but not was legally enforced, right? So that's why 26 November 1949 we celebrate as the Constitution Day, which is known to be a Samvidhan Divas, right? So the role of governor is imposing precedent rule in the state dates as far back 1959, जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे EMS नाबुंदी पाल गवर्नमेंट इन केरला वॉज डिसमिस्ड. अब फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि अब स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे डिसमिस हो सकती है, विच मीन्स दैट जो हमारा EMS था, उनका नाम था नाबुंदी पाल गवर्नमेंट जो केरला में थी, डिसमिस्ड की गई. तो रोल ऑफ गवर्नर टॉपलिंग वन गवर्नमेंट एंड इंस्टॉलिंग अनदर इज नॉट न्यू ईदर. फिर बाद में 1967 में जाके वेस्ट बंगाल गवर्नर धर्मावीरा डिसमिस्ड किया गया एंड अजय मुखर्जी government and install a Congress supported government with PC Ghosh as a chief minister. तो जो governors हैं have also courted controversy by not inviting the single largest party to form the government. तो बेसिकली यहाँ पे गवर्नर के बहुत सारे पावर्स दी हुई हैं, उनकी एग्जीक्यूटिव पावर्स दी गई हैं उनकी, और उसको हम अभी डिटेल मैनर में डिस्कस भी करेंगे. सो बात करते हैं 1980 से 1990s का, कांग्रेस के ईयर्स का. सो अगस्त सितंबर 1984 में गवर्नर रामलाल को इंस्टॉल किया गया मिनिस्टर नंदलेला भास्कर रॉय एज ए चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश. तो जब चीफ मिनिस्टर थे एनटी रामा रॉय, तो उनको अब्रॉड भेजा गया फॉर अ हार्ट सर्जरी. सेम ईयर में सिक्किम के गवर्नर होमी तालेकयान को डिसमिस किया गया नाल बहादुर भंडारी मिनिस्ट्री के से. बोथ इंस्टेंस ओवर ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी रिजीम आर द सेंटर. सो इन 1989 P. Venkata Bomai action to dismiss the SR Bomai government triggered a legal battle, which ended up in the landmark Bomai judgment in the Supreme Court of 1994. So these things we need to always keep in mind, because this judgment is very, very useful for, especially for the law entrance exam, right? Now moving further, we can say 1990s में यहाँ पे आया यूनाइटेड फ्रंट. क्या हुआ 1996 में जो गुजरात के गवर्नर थे हमारे KP सिंह, उन्होंने रिकमेंड किया प्रेसिडेंट रूल को इन द BJP रूल्ड स्टेट. उस टाइम में क्या हुआ था, द सेंटर वॉज यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट हेडेड बाय HD देवेगौड़ा. ये हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, PM थे.
So the crisis for the Suresh Mehta government began after Shankar Singh Waghela 40 odd MLA rebelled and Mehta proved his majority. A majority proved करने के लिए क्या होता है? In constitutional provision there was a floor test. So floor test क्या होता है? इसमें आपको majority prove करनी होती है. The crisis for the Suresh Mehta government began after Shankar Singh Waghela and 40 odd MLA rebelled. So Mehta proved his majority, but the session witnessed a bloody clash between MLAs, which is called Member of Legislative Assembly. So, citing breakdown of the constitution machinery, the governor recommended central rule which was accepted. तो गवर्नर का ये भी काम होता है, स्टेट इमरजेंसी में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. सो these things we got it. So what is the law on governor-state relation? So although envisaged as an apolitical head who must act on the advice of the Council of Ministers, so the governor enjoys certain powers granted under the Constitution, such as giving or withholding assent of bill passed by the state legislature, or determining the time needed for a party to prove its majority, or which party must be called first to do so, generally after the hung verdict in an election. जहाँ पे आपने देखा होगा महाराष्ट्र केस में द टाइम व्हेन देयर वाज एन एकनाथ शिंदे was elected for the Maharashtra chief minister, उस टाइम में भी you can easily look that matter, like there was a constitutional machinery was failed and यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी थी, रूलिंग पार्टी थी, उनको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी पड़ी. ही वॉज फेल टू डू सो एंड दैट टाइम वी कैन सी एकनाथ शिंदे को अपॉइंट किया गया एज अ चीफ मिनिस्टर. सो इनमें द गवर्नर एसेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विदाउट गवर्नर के एसेंट से वहाँ पे स्टेट में ना ही आप स्टेट इमरजेंसी को लगा सकते हो, ना ही आप चीफ मिनिस्टर. जब किसी भी स्टेट में, हमारे जितने इंडिया में स्टेट्स हैं 28 स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जब भी आपका चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट की बात आती है तो वहाँ पे गवर्नर्स का एसेंट इंपॉर्टेंट है. बिकॉज इन आवर कंट्री देयर वाज द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एंड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इट मीन्स दैट 50% प्लस 1 होनी चाहिए. इट मीन्स दैट इफ यू टॉक अबाउट दिल्ली 70 सीट्स हैं और इसमें 50% प्लस 1 मतलब 36 MLAs का जिसका सपोर्ट होगा कैन फॉर्म अ गवर्नमेंट. बट 36 MLA कैन बी इन द रिटन फॉर्मेट, गो टू द Lieutenant Governor and Lieutenant Governor can accept this one, 36 governor support, then can form a government, and that place we can say the chief minister would be appointed and chief minister must be considered as a head of council of ministers. So roles and powers की बात करें यहाँ पे तो आर्टिकल 151 इसमें रिपोर्ट करता है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया relating the account to a state shall have submitted to the governor of the state who shall cause them to the laid before the legislature of the state. अगर बात करें आर्टिकल 153 की गवर्नर की, there shall be governor of each state which we have already discussed the very beginning of this session कि there shall be a governor of each state, but इसको बाद में चेंज किया गया, एक गवर्नर बहुत सारे स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकता है. Provided that nothing in this article shall prevent the appointment of the same person as governor of for 2 or more states. So Article 154 executive power क्या दिए गए स्टेट्स को. So the executive power of the state shall be vested in the governor and shall have exercised by him either directly or through officers subordinated to him in accordance with his constitution. Nothing in this article shall be deemed to transfer to the governor any functions conferred by any existing law or any other authority, or prevent parliament or the legislature or the state from conferring by law functions or any authority subordinate to the governor. Article 155 appointment of governor. So the governor of a state shall be appointed by the president by warrant under his hand and seal, which means that Article 51 ये it means audit report गवर्नर के पास जाती है स्टेट की. फिर गवर्नर क्या करता है, यहाँ पे हर एक स्टेट में गवर्नर होनी चाहिए. आर्टिकल 154 में एग्जीक्यूटिव पावर दी गई स्टेट्स को, एंड आर्टिकल 155 विच इज़ अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर इज टॉकिंग अबाउट. आर्टिकल 156 जो है वो टर्म बताता है यहाँ पे कि अब बेसिकली इसकी कोई भी टर्म फिक्स नहीं है, इसका कोई टेन्योर फिक्स नहीं है कि गवर्नर कितने साल के लिए होंगे. सो द गवर्नर शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. सो द गवर्नर मे बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट रिजाइन हिज ऑफिस. अपना रेजिग्नेशन गवर्नर किसको देता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. सो द basically subject to foregoing provision of this article, governor shall hold office in a term of 5 years from the date on which he enters upon his office, provided that governor shall, notwithstanding
the expiration of his term continue to hold office until his successor enters upon his office. आर्टिकल 157 की बात करें तो क्वालिफिकेशन फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर, तो नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज गवर्नर अनलेस ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया. इंडिया का रेसिडेंट नहीं, सिटीजन होना इंपॉर्टेंट है, एंड हैज़ कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स. सो मिनिमम एज टू बिकम अ गवर्नर इन आवर कंट्री, दैट इज अ 35 ईयर्स, राइट. ही मस्ट नॉट बी श्योर नॉट टू बी मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल. सो आर्टिकल 158 कंडीशन क्या है गवर्नर ऑफिस की? द गवर्नर शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल. जैसे फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट. वन इज लोकसभा विच इज नोन टू बी अ लोअर हाउस, एंड देन वी कैन से अपर हाउस विच इज नोन टू बी अ राज्यसभा, एंड देन थर्ड वन वी कैन से लोकसभा, राज्यसभा, एंड थर्ड वन वी कैन से इज president, because without president assent no bill can be formed as an act. So the governor shall not hold any other office of profit. So the governor shall be entitled without payment of rent to the use of his official residence, and shall be also entitled to such emoluments, allowance and privilege as may be determined by parliament by law, and until provision in that behalf is also made, such emoluments, allowance and privilege as are specified in the second schedule. So where the same person is appointed as governor of 2 or more states, the emoluments and allowance payable to the governor shall be allocated among the states in such proportion as the president may be order determine. तो जो इन्वॉल्वमेंट बिटवीन जो सैलरी एंड अलाउंस होती है गवर्नर की शैल नॉट बी डिमिश्ड ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज ऑफिस. जब तक वो ऑफिस में है तब तक उनकी आप सैलरी को आप उसको क्या कर सकते हो, डिमिनिश नहीं कर सकते. नाउ आर्टिकल 159 ओथ और अफर्मेशन बाय द गवर्नर. Every governor and every person discharging the function of governor shall before entering upon his office make and subscribe in the presence of Chief Justice of India. सो बात करते हैं आर्टिकल 160 डिस्चार्ज ऑफ फंक्शनिंग ऑफ गवर्नर इन सर्टन कंटिजेंसी. जैसे जो प्रेसिडेंट होते हैं दैट मेक सच कोई भी प्रोविज़न बना सकते हैं अगर वो सोचते हैं ऐसा कि एज ही थिंक्स फिट फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द फंक्शन ऑफ द गवर्नर ऑफ अ स्टेट इन एनी कंटिजेंसी नॉट प्रोवाइडेड इन दिस चैप्टर. आर्टिकल 161 में पावर्स दी गई गवर्नर को सिमिलरली लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पावर दी जाती हैं ग्रैंड पार्डन की पावर, मतलब किसी को माफ़ी करने की, सस्पेंड करने की, डेथ सेंटेंस को सिमिलरली गवर्नर को भी पावर दी गई है कि गवर्नर इज ऑन पावर्स टू ग्रांट पार्डन्स, रिप्राइव्स, रिस्पाइट्स और रिमिशन ऑफ पनिशमेंट और टू सस्पेंड, रिमिट और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन convicted of any offense against any law relating to matter to which the executive power of the state extended. अब बात करेंगे हम आर्टिकल 163 की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड द एडवाइस गवर्नर. So there shall be a council of ministers with the chief ministers as the head to aid and advise the governor in exercise of his function, except in so far by under his constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion. So if any question arises, whether any matter or in not a matter as respect which his governor is by or under this constitution required to act in his discretion, the decision of the governor in his discretion shall be final, and the validity of anything done by the governor shall not be called in questions on the ground that he ought or ought not have acted in his discretion. So questions whether any or if so what advice was tendered by ministers to the governor shall not be inquired into in any court. जब तक वो पोस्ट पे हैं आप उन्हें किसी भी कोर्ट में नहीं लेके जा सकते, उनके ऊपर कोई भी लीगल सैंक्शन नहीं हो सकता, लीगल केस आप पेनलाइज नहीं कर सकते उनको. ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है. और आर्टिकल 167 जो है जो ड्यूटी दी गई है वहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर एज respect the furnishing of information to governor. So article 168 constitution of legislation in states. So for every state there shall be a legislature which shall consist of governor, and in the state of Bihar, Maharashtra, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश जहाँ पर 2 हाउसेस हैं, ठीक है, जो मैंने आपको बताया जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है. सो बाई कैमरलिज्म विच मीन्स दैट वी कैन से बाई कैमरलिज्म क्या होता है आपका बाई कैमरलिज्म विच मीन्स देयर इज एन
लेजिस्लेटिव असेंबली ऑल्सो एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो। इनके हिंदी नाम भी याद रखें, इसको विधानसभा भी कहते हैं, विधानसभा एंड विधान परिषद, विधान परिषद। सो यहाँ पे जो स्टेट हैं बिहार, महाराष्ट्र, जो बहुत बड़े स्टेट्स हैं, वहाँ पे आपकी काउंसिल्स भी होती हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल सिंपली वर्क लाइक एन राज्यसभा। सो आर्टिकल 171 कंपोजिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स क्या होते हैं इसमें, of the total number of legislative council of a state, as nearly as be 1/3 shall be elected by electorate consisting of member of municipalities, जो district boards होते हैं, such as other local authorities in the state as parliament may by law specify. So अब बात करते हैं आर्टिकल 164 अदर प्रोविजंस दिए गए एज टू मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर shall be appointed by the governor of any other ministries shall be appointed by the governor in on the advice of chief minister. But यहाँ provided that in a state of like छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड, मध्य प्रदेश, Odisha, there shall be a minister in charge of tribal welfare who may be in addition in charge of the welfare of scheduled caste and backward class of any other work. और एडवोकेट जनरल जो होते हैं स्टेट्स के होते हैं, सो द गवर्नर ऑफ ईच स्टेट शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी अपॉइंटेड इन जज ऑफ हाई कोर्ट टू बी एन एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट. So in short we can say that there shall be duty of the advocate general to give advice to the government of a state upon such legal matters, and it is simply work like a solicitor general. The solicitor general is for the central government and advocate general is for the state government, right, and perform such other duties of the legal character as may from time to time be referred or assigned to him by the governor and to discharge the function conferred by him or under the constitution. बात करना आर्टिकल 166 की, तो 166 में कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस के बारे में बात की गई है. सो कंडक्ट ऑफ बिजनेसेस ऑफ गवर्नर ऑफ ए स्टेट, जितने भी एग्जीक्यूटिव फंक्शन एक्शंस होते हैं ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ ए स्टेट शैल बी एक्सप्रेस टू बी टेकन इन नेम ऑफ द गवर्नर. सिमिलरली इन द स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो जितने भी हमारे Prime Minister doing each and everything with the name of President. So all the executive action of the government of a state shall be expressed to be and taken in the name of governor. Orders and other instrument made an executed in the name of governor shall be authenticated in such manner as may be specified in rules to be made by the governor, and the validity of an order or instrument which is so authenticated shall not be called in questions on the ground that it is not an order or instrument made or executed by the governor. So the governor shall make rules for the more convenient transactions of the businesses of the government of the state and for the allocation among ministers of the state of the said business. And in so far it is not business with respect to which the governor is by or under this constitution required to act in his discretion. So if you try to recap this session, we can easily see that where we have started. Yeah, so we can see here we have to understand, make points like simple one liner like Shri Pratham Shukla takes oath of new governor, B.D. Mishra लेफ्टिनेंट गवर्नर. मेनली 10 जब आपके पेपर हो रहे होंगे जिस भी टाइम में, तो आप देखो कि लास्ट के 6 to 1 ईयर में जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन दैट ये कौन कौन से बंदे अभी न्यू गवर्नर अपॉइंट हुए हैं, कौन कौन न्यू चीफ मिनिस्टर हैं, कौन कौन से स्टेट्स में इलेक्शंस हुए हैं. सो यू नीड टू कीप एन आई ऑन दैट, राइट. सो लाइक यहाँ पे बैक स्लोगन्स हुआ, इसका क्या इम्पैक्ट होगा. एल.जी. गणेशन स्वर्ण के नागालैंड गवर्नर, नागालैंड की यहाँ पे इससे पहले कौन थे, ठीक है. तो दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट नीड टू रिमेंबर. लाइक रिशफल राजभवन धर्मा, जहाँ पे गवर्नर्स रहते हैं उस प्लेस को कहते हैं राजभवन, ये ध्यान रखना. उसके बाद हम बाकी चीज़ें डिस्कस करें किसी स्टेट में गवर्नर की अपॉइंटमेंट होने वाली है. सो बिकॉज दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अंटिल अनलेस वी विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि लाइक इसमें कौन सी स्टेट में गवर्नर अपॉइंट होने वाली हैं एंड गवर्नर्स के क्या रूल्स होते हैं, क्या पावर्स होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं. सो दैट विल बी नो वर्थ टू रीड ऑल दिस कंटेंट विदाउट नोइंग द बेसिक कंसेप्ट, राइट.
अब यहाँ पे ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लाइक रमेश व्यास गवर्नर ऑफ झारखंड हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र एंड ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो ये चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है टू अपॉइंटिंग अ गवर्नर, दिस इज वी हैव डिस्कस्ड इन हियर आर्टिकल 153 एंड ऑल। बाकी आर्टिकल्स क्या कहते हैं, उसमें क्या क्या पावर्स दिए गवर्नर्स को, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स क्या क्या दी गई इसमें, और इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स क्या क्या दी गई हैं। पहले के बैकग्राउंड क्या थे 80s 90 में, व्हाट वाज द रोल ऑफ गवर्नर, दैट वी आल्सो वी हैव डिस्कस्ड। इसके बाद रूल्स एंड पावर्स ऑफ द गवर्नर डिटेल मैनर वी हैव डिस्कस्ड आर्टिकल 151, 53, 54। फिर 56 में टर्म ऑफ द ऑफिस क्या होनी चाहिए, फिक्स्ड नहीं होती है, 5 ईयर्स की टर्म होती है, दैट वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इन दिस। 51 में ओथ और अफर्मेशन की बात की हमने, गवर्नर कितनी ओथ ऑफ अफर्मेशन होती है, वो सारी चीज़ें। कंपोजिशन क्या होती है लीगल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की, वो हमने डिस्कस की। प्रोविजंस क्या क्या होते हैं, किस किस को अपॉइंट कर सकता है गवर्नर, वो हमने डिस्कस करी। सो आई होप दिस वन इज़ वेरी क्लियर फॉर नाउ ईच एंड एवरी वन। सो try to find it out like which things is very important for your exam perspective, because until unless you will not able to understand like what exactly the for your exam perspective which is important, what is relevant, what is not relevant, right? And I made it very simple and lucid manner, like what is important takeaways, what are the important takeaways for your exam that we have discussed right now, right? So I hope that you enjoyed the session a lot, and we'll meet you tomorrow at the same time for the daily newspaper analysis. Thank you so much for joining with us. If you are new in this channel, please subscribe the channel as well, and do not forget to press the bell icon so you will get the notification of all our Pratham test prep mentors. So stay tuned. We'll meet you tomorrow at the same time at 11:30. Thank you so much for joining with us, and इस वीडियो को आप जहाँ तक भी शेयर करो so that कि it will reach to the maximum number of aware people, maximum number of your friends, colleagues and all. Thank you so much for joining with us. Bye bye and take care once again.